Hello everyone, welcome to Prime Classes. In the last class, we saw the ray diagram rules for lenses, and in this class today we're going to start the ray diagram for convex lens. In the next class we will do for concave lens, but right now we're going to do ray diagrams for convex lens. So let's start today's class. Yes, ray diagrams for convex lens, same positions for 6 positions जो हम लोग मिरर पे पढ़े थे, कॉन्केव मिरर पे पढ़े थे. At first let us see the positions of the object. कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ कहाँ पे रखते हैं. Suppose this is a convex lens. Now to define the position, I have to draw the principal axis. Suppose this is the principal axis, and this is F1, this is C1, this is F2, this is C2. ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं. सो यहाँ पे भी अगर मिरर के जैसा हम लोग पोजिशन करें ऑब्जेक्ट को, द फर्स्ट पोजिशन विल बी, लेट मी राइट, द फर्स्ट पोजिशन विल बी द पोजिशन जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर लेंस से सबसे ज्यादा दूर पर रखेंगे, दैट इज एट इन्फिनिटी. कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं. दिस इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकंड की थोड़ा सा सामने लाएंगे बट C1 को टच नहीं करेंगे. सो दिस विल बी द सेकंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि C1 के सामने अगर लेंस से देखें तो बियॉन्ड C1. थर्ड पोजिशन विल बी एट C1 पे डायरेक्ट अगर यहीं पे रखें तो क्या होगा. एंड फोर्थ पोजिशन विल बी इन बिटवीन C1 एंड F1. दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा. एंड द नेक्स्ट पोजिशन विल बी, थोड़ा सा और सामने जाएंगे, एट F. अगर F पे रख दिए तो कहाँ पे बनेगा. एंड द लास्ट वन विल बी F एंड दिस लेंस. अब दिस लेंस, इसमें कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट व्हिच इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो हम लोगों का इमेज कहाँ पे बनेगा, हम लोग वो देखने वाले हैं. ओके, सो दिस इज पोजीशन 1 एट इंफिनिटी, this is position 2 beyond C, this is position 3 at C, position 4 in between C1 and F1, position 5 at F1, position 6 at in between F1 and O, that is optical center. So these are the 6 positions of the object for ray diagrams of convex lens. Now let's start one by one. The first position is at infinity, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा. बाय द वे, इन ऑल दीज लेंसेज जहां जहां पे हम लेंस लें, यहाँ पे 2F एंड 2F करके लिखा हुआ है. सो मेक्स यू टू पुट 1 1 एंड 2 2. एंड ऑल्सो ये जो 2F लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द C को हम लोग कभी कभी 2F के फॉर्म में भी लिखते हैं. दैट इज F1 and this is 2F1. Why? Because F1 का डबल ही है. This is F2, this is 2F2. Okay, so this is how we are going to do. So the first object position is at infinity. By the way, if the object is at infinity, the light that comes from that object becomes parallel to principal axis. Okay, so जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं, that means लेंस से बहुत ज्यादा दूर में रखते हैं, तो उससे आने वाली लाइट रेज क्या होती है, पैरेलल होती है. So let's take parallel rays of light. Suppose this is one light ray, this is another light ray. Are these looking parallel? Let me take properly. This is, yes, close to parallel. This is another light ray. This is another light ray. Okay, so these are the light rays. Now ये जो light rays है, because all of these are parallel, so after refraction what will happen, all the light rays will go crossing the focus of the lens. सब सारा light rays focus को काट के जाएगा. So after refraction this light ray will go like this, this light ray will go like this, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा. So this is how the refraction of light will take place. Okay, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन है, सारे लाइट रेज F को काट के जाएंगे. सो हम लोग जानते हैं कि आफ्टर, जैसे कि मिरर में हम लोग कर रहे थे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे लाइट रेज मीट कर रहे थे, अगर जिस पॉइंट पे मीट कर रहे थे वहां पे हम लोग का इमेज बनता है. अगर रियली में मीट करे तो रियल इमेज, अगर रियली में मीट नहीं करते उसका एक्सटेंशन मीट करता है तो वर्चुअल इमेज. यहाँ पे भी पूरा पूरा सेम वैसे ही है कि आफ्टर वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन light rays are converging at this point F. So this is the point
of the location of the image, यहाँ पे हम लोग का image बनेगा कहाँ पे, F में. So position of image at F. Okay. Now nature of image, क्योंकि this is all the light rays are pointing converging at a single point, the size of the image will be point sized or very diminished. We can say point sized. Okay, next about the nature of the image, ये real होगा. Why? Because the light rays are meeting each other in real. And about the orientation से पहले हम लोग को देखना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है. अगर रियल है तो ऑलवेज इन्वर्टेड, अगर वर्चुअल है तो ऑलवेज इरेक्ट. ओके, सो इफ इट इज रियल then the image will be inverted. Okay, so that's it. This is the ray diagram for the object which is kept at infinity. Now come to the next one. Object when kept beyond 2f1. First let me draw an object. So this is 2f1. Okay, let me write 1 2, so it will be better. This is 2f1, this is 2f, oh sorry, this is f1, this is f2, this is 2f2. Okay, now the object is at this place. Yes, this is the location of the object. I have to draw the image for this location of the object. Now I can take any two any two light rays, and after refraction मुझे देखना है कि वो कहाँ पे intersect कर रहे हैं आपस में दो rays. So one of the rays that I can take is parallel, कि अगर light ray parallel होगा तो ये focus को काट के जाएगा. एक हम ले सकते हैं दूसरा कि focus, अगर focus को काट के गया है तो ये parallel निकलेगा. So these are the two light rays that I can take. Okay, एक जो parallel है, दूसरा जो f1 को काट के जा रहा है. So after reflection ये कैसे behave करेंगे? जो पैरेलल लाइट रे है, ये जाएगा फोकस को काट के, ये जाएगा फोकस को काट के, दैट इज f2, एंड ये जो फोकस को काट के आ रहा है ये निकलेगा पैरेलल. ओके, सो दिस इज हाउ दे विल बिहेव. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन. सो दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, वहां पे बनेगा इमेज. सो लेट्स ड्रॉ एन इमेज. This is the point of formation of image. Okay, and this is in between f2 and 2f2, or we can say focus and center of curvature. Okay, so the position of the image between f2 and 2f2. by the way, ये कॉनकेव मिरर में वही वाला पोजीशन है जहाँ पे बियॉन्ड सी पे रखने से f और c के बीच बनता है. यहाँ पे भी लगभग उसी तरह का सिचुएशन बनता है. ओके, सो नेचर ऑफ द इमेज, क्योंकि रियल में मीट कर रहे हैं, सो इट विल बी रियल. बट अबाउट द साइज, तो साइज से पहले इसका ओरिएंटेशन देखे तो उल्टा है, सो इट विल बी इन्वर्टेड. एंड व्हाट अबाउट साइज? साइज ऑब्वियसली दिख रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज. ऑब्जेक्ट से छोटा लग रहा है, दैट मींस डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड मींस कि छोटा है उससे. डिमिनिश्ड, दैट्स इट. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज. उसका पोजीशन है f2 and 2f2 के बीच, एंड नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. At 2f1, this is 2f1, this is f1, this is f2, this is 2f2. This is 2f1, this is f1, f2 and 2f2. Yes, this one at 2f1. यहाँ पे एकदम ऑब्जेक्ट अगर रहा तो. Okay, now if this is the object, I have to take any two rays, light rays, और उसका देखना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कैसे बिहेव करते हैं वो दोनों रेज. सो फर्स्ट रे दैट आई कैन टेक इज पैरेलल. आई कैन टेक इट ऑलवेज बिकॉज इट इज वेरी हैंडी. एंड सेकेंड वन आई कैन टेक इज थ्रू द फोकस, कि फोकस को काट कर गया तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं. ओके, ऑलमोस्ट लाइक दिस. ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिहेव लाइक, ये जो पैरेलल है वो जाएगा फोकस को काट के, एंड ये जो फोकस को काट के आया है ये निकलेगा पैरेलल. ओके, सो दिस इज हाउ द रेज विल बिहेव. नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे इमेज बनेगा. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज just at 2f2. Okay, here the diagram is a little bit we can say up and down, but the exact diagram, the exact image will be formed at 2f2. Very close. This is where the image will be formed. Okay, 2f2. This error arose due to
the distance between this distance and this distance, these are not equidistant. अगर ये equidistant होता तो exactly वहीं पे image form होता. By the way, this is also correct. This is why the image is being formed. Okay, this is after refraction, and this is before refraction. Now let's study the properties of image का first of all position क्या है, at 2f2. at 2f2, this is the situation of concave mirror, जहाँ पर लोग C पे रखते थे और C पे ही बनता है. All the light rays are very similar to each other. Now what about the nature? This is real, inverted क्योंकि ये उल्टा है, and or same size. Okay, so these are the properties of image formed for an object which is kept at 2f1. Now come to the next one, which is between f1 and 2f1. This is 2f1, f1, f2, 2f2. So the object, if I keep the object in between this point here, where will be its image? So draw the image. One light ray I can take is parallel, and the light ray I can take is focus. Okay, so it's out of the lens. Let's do one thing. Yes, so draw it somewhere else, somewhere in between this, between 2f1 and f1. Okay, so if this is the object, this is the one light ray that still not, let me take it little bit small object, like this. Now it should do the job. Suppose this is the image, sorry, this is the object, this is the object. Now I have to draw the light rays. One कि अगर फोकस को काट के गया, दूसरा अगर पैरेलल, so parallel light ray will go by crossing f2 को काट के जाएगा, और ये जो फोकस को काट के आया है ये निकलेगा parallel. So this is how the ray diagrams will be after refraction meeting at this point. So this is why the image will be formed at this location. अगर इसको देखें साफ साफ पता चल रहा है, the position will be beyond 2f1. What will be the position beyond 2f1? What will be the nature? It will be real, inverted, and magnified. Why magnified? क्योंकि ये object से बड़ा लग रहा है. Okay, so magnified. So these are the properties of image formed for an object which is kept in between 2f1 and f1. Now come to the next one. At f1 की अगर f1 पे ही हम लोग रख दिए तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है? अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग f1 पे रख दिए यहाँ पे at this point, so where will be its image? I can take any two rays, light rays. One is parallel, the second one I will take कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर को काट के जा रहा है, so ये ऐसे निकल जाएगा, बट ये जो है, ये जो पैरेलल, ये f1 को काट के जाएगा. ओके, एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव आफ्टर रिफ्रैक्शन. ये पैरेलल है, इसलिए फोकस को काट के जाएगा, और क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है, इट विल गो अनडेविएटेड, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए जाएगा. ओके, so if we see that these light rays will never ever reach because these are parallel, और we can say अगर मिलते भी हैं तो कहाँ पे मिलेंगे? at infinity. अब क्योंकि infinity में मिल रहा है, so the position of the image will be at infinity. At infinity. About the nature of the image, magnified होगा, क्योंकि बहुत दूर में मिलेंगे तो बहुत ही, यहाँ से इमेज ड्रॉ करने से बहुत ही बड़ा होगा, so it will be highly magnified or we can say magnified. Okay, and रियल में मीट करेंगे, so चाहे infinity पे ही क्यों ना हो, but रियल में मीट कर रहे हैं, so real, and real है, so it will be inverted. So these are the properties of image formed for an object kept at focus. Now come to the last one and also the very important one, कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं between lens and f1, लेंस और f1 के बीच में जब रखते हैं, so this is 2f1, this is f1, this is f1, this is 2, sorry, this is f2, this is f2, this is 2f2.
अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर और लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं, सो इन दैट पोजिशन, इन दैट केस किस तरह का इमेज बनेगा? ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब इसका टू लाइट रेज लेंगे. वन आई कैन टेक इज पैरेलल, वन लाइट रे दैट आई कैन टेक इज पैरेलल, पैरेलल आएगा. दूसरा लाइट रे की ये जो है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा, तो ये जिस तरीके से जा रहा है वैसे डिवाइड हो जाएगा, बट ये पैरेलल जो है फोकस को काट के जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ इट विल बिहेव. It will go something like this. Now you can see that these two light rays are deviating from each other. एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं. So ये इस साइड में तो कभी मिलने वाला है नहीं. So what we have to do, we have to extend it to the left part, to the same side of the object. So इसको अगर इधर extend करें हम, if I extend it to the left side, what I will get, let's draw extension with a yellow color. It will be something like this, and for this light ray it will be something like this. Okay, yes, this is how they'll be extended to the left part. I can erase this part. So this is where they are intersecting each other. Now that is the point of formation of image. Image कहाँ पे बनेगा? That is the point where image is being formed. So let's draw the image at this point. Okay. Now ये जो image होगा, क्योंकि ये actually में meet नहीं कर रहा light rays, so the image will be virtual. By the way, before that इसका पोजीशन क्या होगा? इसका पोजीशन नॉट F2 F1 एंड F1 के बीच नहीं, इसका पोजीशन होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां पे है उसी साइड में इसका इमेज बनेगा, क्योंकि ये F1 टू F1 के बीच भी बन सकता है, टू F1 के इस पार भी बन सकता है, F1 के सामने भी बन सकता है, बट हाँ ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगा उसी साइड में इसका इमेज होगा. ओके, सो द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी ऑन द सेम साइड, on the same side of the object, or we can say लेंस के जिस साइड में रखा हुआ ऑब्जेक्ट उस साइड में होगा. नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है. वर्चुअल, इसका साइज देखा जाता है मैग्नीफाइड, और क्योंकि ये वर्चुअल है और जैसा हम लोग को फिगर में दिख भी रहा है, इट विल बी इरेक्ट और वी कैन से अपराइट. Okay, so these are the properties of image formed for an object kept it in between focus and optical center. By the way, ये वही वाला केस है जब हम लोग किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो जो कोई भी लाइक सम टेक्स्ट ऑफ द बुक, तो वो टेक्स्ट को देखने के लिए अगर बहुत दूर से देखें तो ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं दिखेगा. सो उसको क्लोजली और मैग्नीफाइड वे में देखने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो टेक्स्ट इस फोकस से थोड़ा सा कम, फोकस के अंदर आ जाए. अब उससे होगा क्या कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा, और उससे हम लोग को फिर वही वाला चीज मैग्नीफाइड वे में दिखने लगेगा. अगर फोकस के इस पार होगा तो हम लोग को मैग्नीफाइड वे में नहीं दिखेगा, बट हाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, तो उससे हम लोग को जो भी टेक्स्ट है दैट लुक्स मैग्नीफाइड. सो दिस इज हाउ द लेंस वर्क. And this is the summary for convex. Again there is a mistake, not mirror, convex lens. Okay, convex lens. So convex lens, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी पे रखने से फोकस F2 पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड और वी कैन से पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, दोनों में से कोई एक चलेगा. बियॉन्ड F1 पे रखने से ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो बनेगा F1 टू F2 के बीच, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट विल बी डिमिनिश्ड. ओके, अगर 2F1 पे रखे तो 2F2 पे बनेगा. ये वही वाला केस है जब मिरर पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखने से वहीं पे उसका इमेज भी बनता है. सो दिस इज द सेम सिचुएशन. नेक्स्ट वन इज बिटवीन F1 एंड 2F1, इस पोजीशन पे रखने से इमेज बनेगा 2F2 पे, रियल इन्वर्टेड, इट विल बी एनलार्ज्ड. ओके, एंड अगर F1 पे रखें ये बनेगा इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड होगा.
बिटवीन लेंस एंड फोकस, लेंस और फोकस के बीच में अगर रखें, सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड पे बनेगा वो, एंड इट विल बी वर्चुअल upright, and also it will be enlarged. Okay, so that's it for today. These were all the ray diagrams for convex lens. In the next class we're going to do ray diagrams for concave lens. So that's it for today. See you in the next class. For more videos like this, subscribe to Prime Classes.